Namaskar, good afternoon. Thank you for joining us today. We are here on behalf of the All India Congress Committee's Research Department to release this year's edition of the Real State of the Economy report. I'm Professor Rajeev Gowda, Chairman of the Research Department, and joining me today is Amitabh Dubey, who is the Research Coordinator for the Media and Communications Department. This is the report that we will be sharing with you. It is a report which is got the theme, Inequality on the Rise, Welfare in Retreat, the Real State of the Economy 2026. Next. Now, you would be familiar with a tremendous amount of self-congratulatory dialogues and discussions orchestrated by the Modi government. There are terms like Goldilocks moment for the Indian economy that are being used by the Modi government and its fans. Unfortunately, this is far from the reality, and what we are here to do today is to present you the raw facts about the state of India's economy. This triumphalist propaganda that is going to be unleashed on you in the next few days, starting with the economic survey, the president's address, and then, of course, the budget itself, is going to be a deluge that you need to be able to have the facts and figures to confront. And those facts and figures are shared in this document that we are presenting to you. First of all, let me point out that, next, the question that you must ask is, can you believe the Modi government's numbers? The International Monetary Fund recently gave the Modi government's numbers a C grade, saying that they're unreliable. The numbers show 0.5% inflation. Is that the reality that you are experiencing? Is that the experience, the lived reality of the vast masses of India, the majority of the people? If you look at this government's own former chief economic advisor, Arvind Subramanian, he also has calculated, based on various underlying facts and figures, that GDP figures offered by this government are at least 2.5% higher than the actual reality. In fact, if you look at the 2024 numbers, the government calculates GDP using something called the production approach, and that is 9.2% GDP growth, but that's 47% higher than GDP calculated by another method called the expenditure method, which is 4.9%. Normally, both these numbers should match. When there is such a severe mismatch, clearly something is wrong. And then, in the first half, you had some record-breaking numbers saying that manufacturing grew at 8.4%. But if you look at the biggest component of manufacturing, the index of 8 core industries, that grew only by 2.9%. So where are these numbers coming from? Please ask these questions in the next few days when you're confronted with the government's data. Of course, you may all be asking this question as well. If the economy is doing so well, why is the rupee collapsing? We have seen the rupee being the worst performing currency in Asia against the dollar in the last 1 year. And this month itself, you have seen that the rupee is sprinting. It has fallen to by the end of the year, it had fallen to 91, and now before this month ends, it has sprinted to 92. Is this the sign of a strong economy if the currency is weakening every day? If the economy is growing at this pace, you should see a flood of investments coming into India. Instead, you see the reverse happening. Foreign direct investment, net investment is
is the other way around, is negative. And even Indians are preferring to put their money overseas. Every year, under Modi Sarkar, 4,000 to 5,000 high net worth individuals, millionaires, are fleeing the country. What do they know that everyone else doesn't? Further, if the economy is doing so well, where are the jobs? If you look between 2017-18 and 2023-24, the share of workers in manufacturing fell from 12.1% to 11.4%. In services, came down from 31.1% to 29.7%. We will be giving you all these details and a copy of the report, so bear with me as I keep moving forward. The first question that should strike you is, what happened to Make in India? Why is manufacturing employment dropping if Make in India is any kind of a success? Where are the jobs being created? In agriculture. The share has gone up from 44.1% to 46.1%. As any economist will tell you, the standard trajectory of development is from farm to factory, from agriculture to manufacturing to services. In India, we are seeing the opposite. Agriculture, the growth rate is only about 16%, and more population is now living off agriculture. It is going to be less productive and underemployed, and this is hardly the direction we want India to move forward with. Whatever jobs are being created in the low-value, informal sectors, particularly in the gig economy, and we know from what happened around New Year's that there is tremendous precarity and insecurity in terms of gig jobs. Further, even if you had a job, 40% of those with salaries have no contracts or paid leave or social security. Hardly a Goldilocks economy. Further, inequality is worsening. We've seen this from the time of the COVID recovery. We've essentially seen a K-shaped recovery. Those who are doing well are doing spectacularly well. That's the K-shape, the top arm of the K. And those, the rest of Indians, the vast majority, are sliding down every year. The government is in denial about this. If you look at this, the inequality, the top 10% of Indians capture 58% of national income. The bottom 50% get 15% of income. The top 10% own 65% of India's wealth. The bottom half own 6.4%. And our friends, the crony capitalists, the top 1% of India owns 40% of India's wealth. That is the level of inequality. 4 out of 5 Indians live off less than 200 rupees per day. 1/3 of Indians on less than 100 rupees per day. And net financial savings in households is at a decade low of 5.2%, and household debt has gone up sharply. Cumulatively, when it comes to direct taxes, people, you and me, are paying more direct taxes than all the corporates put together. So that is the reality of this government and the inequality that is flourishing under this government. Now, you recall this statement of the Prime Minister when the discussion about the caste survey came up. He said the 4 castes, 4 biggest castes for me are the poor, youth, women, and farmers. What has he done for them? For the youth, the first question is, where are the jobs? Between April to September 2025, youth labor force participation fell from 42% to 41.3%. What does this mean? If people are not in the labor force, it means that they are too discouraged. They've stopped even looking for work. That is the basic problem and plight of India's youth. Youth employment has come down from 35.8% to 35.2%. Unemployment has grown to 15%,
And in urban areas, youth unemployment is 18.4%. Nearly 1 in 5 youth is unemployed in urban India. There was this idea that the Congress party had floated in our manifesto for the 2024 election about creating apprenticeships. And this government took that idea and set up something called the Pradhan Mantri Internship Scheme. It talked to all the leading corporates and announced that it was going to create lakhs of internships. However, the reality is that only 2,066 people have completed their internships, and out of those, only 95 have got job offers. Every year, about 2 crore youth enter the workforce, 95 get job offers. Okay? You know, the India Skills Report also continues to point out that only 1 in 2 graduates is actually employable, and there was supposed to be the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, which is supposed to skill our youth and give them the capabilities to enter the workforce. Unfortunately, you should look at the CAG report on the functioning of the PMKVY, and it has turned out to be a spectacular failure. It's not as if corporate India hasn't been doing well and cannot create jobs. The 2025 economic survey showed that corporate profits grew 22.3% in the last couple of years, but jobs grew only 1.5%. In fact, if you had a salary, your real wages in June 2024 were 1.7% lower than 5 years earlier. So essentially, people, even if they had jobs, are facing a much worse situation. What about the poor? What about farmers? 2 more of the Prime Minister's priorities. Well, if they are getting the kind of priority, if this is the priority that the Prime Minister gives them, they would be much better off not even being drawn to his attention. We saw in the last session of Parliament in the winter that essentially the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme was scrapped in favor of a new program where the right to employment, that empowering social safety net which the UPA had established. Look at this figure behind me, which came to the rescue of this government after COVID when people were back in their villages and trying to survive. This is the program that provided the safety net. Now the government has abolished it. It is going to pass on more of the burden to the states. And I can predict here, given the fiscal situation of the states, that this is as good as killing any program aimed at providing a social safety net for the poor and farmers in rural India. Essentially, this is a pattern that is not new. They have been starving Manrega of funds, and they have been using technology to exclude more and more people over time. What about the poor in general? Are they getting enough to eat? Well, are they getting adequate nutrition? The food subsidy as a percentage of budgets has been dropping considerably, and at the same time, 12% of our population remains undernourished. The portion tracker, as of just 2 months ago, said that 31% of India's children below 5 years are stunted. Stunted, wasted children. These are our children whose future development is being thwarted, is being crippled by the lack of attention that we need, from this government to their nutrition needs. Anemia in adolescent girls went up from 54% to 59% between the last 2 national family health surveys. We've just seen, and we are experiencing in this city of Delhi, the tremendous air pollution, air quality, which is so bad that the measurement is off the scale, that we're not able to even measure how bad the air quality is. And we just needed a reminder from the former IMF chief economist,
Harvard professor Geeta Gopinath, who pointed out that pollution poses a greater threat to India's economy than even tariffs. Well, the State of Global Air report says that 20 lakh Indians died prematurely because of polluted air in 2023 alone. This is a silent killer, and people are not agitated enough. Last session, we had asked for a debate in Parliament, but Parliament was adjourned before we could get to it. The Lancet, the leading medical journal, says that if you monetize the value of premature mortality in India, it is equivalent to 9.5% of India's GDP. Is the government paying attention to that? What did the minister say? In Parliament, there is no direct connection between air pollution and health, okay, and lung disease. What else is going on? Are we investing in our children, in their education? Well, enrollment in government schools and aided schools has dropped tremendously. If 25 crore students enroll, only less than 7 crore actually make it to secondary school. So where is the workforce? What are we doing to our children and their future? And what happens? There are lots of positions, sanctioned posts in government schools, and they are lying empty. And this is not just, the government is, Modi government is an equal opportunity offender when it comes to education. It's not just government schools. They have slashed funding for higher education. They have not filled positions in central universities, in various All India Institutes of Medical Sciences, in IITs, IIMs. And the end result is the tragedy. Student suicides have surged by 65% in the last decade under Modi Sarkar. What about women? Another of the priority areas for Modi Sarkar. 1 in 4 urban young women who want to work cannot find a job. They will say women's labor force participation is increasing because they're asking the question and people are responding. But that is increasing because more are working in the farm, because men are moving to the cities, and more are working in unpaid household labor. That is not meaningful formal employment. 68 lakh students exited schools in 24-25, out of which 32 lakhs were girls. Okay. And more than half of pregnant women in India are anemic. That has all kinds of implications for them, for their childbirth, and for the children's health. And elderly women, of course, face disproportionate vulnerability and lack of financial security. And finally, when we think about our elderly, when we think about our most vulnerable, our disabled, what is the situation? The National Social Assistance Program, which provides non-contributory income security, has been slashed. The budget has gone down from 10,000 crores in 2014-15 to 9,650 crores in 25-26, from 0.6% to just 2% of the budget. So if this is how you take care of the elderly, remember, we keep talking about the demographic dividend and focus on our youth, but we are also a rapidly aging society, a silver society, and a lot of older people are there without any financial security. Greater than 40% of elderly are in the poorest 20% of the population quintile, and 18.7% have no source of income. What is the social security amount that the government has frozen? 200 rupees per month. 78% of the elderly population does not receive any form of pension support. So clearly, there is so much that we have to share with you about what the true state of India's economy is, how inequalities are worsening, how in spite of that, in spite of having the figures, being aware of what is going on, this government willfully chooses to cut corporate taxes, but not to pay attention to social safety nets. It has cut the Manrega, the social safety net that took care of the poor in rural India in their most desperate times, when they had already brought it down to 30 days of employment.
they proclaim that they're giving a guarantee of 125. I predict here that it will not come to even 10 days in the next year once the new VBG, Ramji program comes into operation. It is a tragedy for the people of India that this is the kind of mismanagement of the economy that they have to endure and suffer. I appeal to the media to spread the insights that we are sharing with everyone so that we do not get deluded by the barrage, by the wave of disinformation and misinformation about the true state of the economy that this government is going to unleash on you in the next few days. I request Amitabh Dubey to continue this press conference in Hindi, please. धन्यवाद राजीव जी। मैं इस जैसे कि प्रोफेसर गावड़ा ने कहा, ये एक बड़े विस्तार से सारे तथ्य और सारे फैक्ट्स आपके सामने इस रिपोर्ट में रखे गए हैं। मैं हर आंकड़ा आपके सामने नहीं रखूंगा, मैं गिन चुन के आपको बताऊंगा कि इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं। पहले स्लाइड पे चलते हैं। आज हम बात करेंगे भारत की असली आर्थिक हालात के बारे में। ये जो नंबर्स, जो आंकड़े सरकार आपके सामने रख रही है, खास करके जीडीपी के, ये लोगों की ज़िंदगी से अलग हैं, उनसे विपरीत हैं, उनके अनुभव के विपरीत हैं। जैसे कि सरकार कहती है कि जुलाई सितंबर 2025 में जीडीपी का ग्रोथ रेट था 8.2%, और इसमें जो डिफ्लेटर है, जो एक इन्फ्लेशन बताता है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, वो 0.5% बताए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% है। अब मुझे बताइए, ऐसा कौन सा परिवार है इस देश में जिसका अनुभव है कि महंगाई या उसका बजट में जो बढ़ रहा है वो 0.5% सालाना बढ़ रहा है? ये तो नामुमकिन है, ये किसी का अनुभव नहीं है। तो जो इन आंकड़ों में जो गड़बड़ी है, ये सीधा साबित करती है कि जो लोगों की जिंदगी का अनुभव है वो इन आंकड़ों में ये आंकड़े दर्शाता नहीं है। क्या अगर ये आंकड़े सही हैं, इसका ये मतलब है कि सरकार ने महंगाई का मुद्दा, जो महंगाई का संकट है, उसे निपटा लिया है पूरी तरह, और ये तो बिल्कुल गलत है, ये किसी का ऐसा अनुभव नहीं है। तो जो इन आंकड़ों में गड़बड़ी है वो इससे सीधी दिखाई देती है, और यही कारण है या अलग अलग कारण है कि आईएमएफ ने भारत के नेशनल अकाउंट्स को सी ग्रेड दिया है। ये थोड़ा टेक्निकल मामला है, अगर आप इसमें गहराई में जाना चाहते हैं हम जा सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो हमारा स्टैटिस्टिकल सिस्टम है वो पुराना है, आउट ऑफ डेट है, और उसमें जो विफलताएं हैं इसके कारण आईएमएफ ने भारत के नेशनल अकाउंट्स को एक सी ग्रेड दिया है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये आईएमएफ कह रहा है। आपको मालूम है कि मोदी सरकार के पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने खुद कहा है कि भारत का जो जीडीपी का रेट है वो 2.5 ज़्यादा दिखाई दे रहा है हकीकत से। यानी कि अगर ये 8 दशमलव कुछ बता रहे हैं तो सच्चाई 5-6 के बीच में होगी। उदाहरण के तौर पे जैसे प्रोफेसर गावड़ा ने आपको बताया कि जीडीपी को कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है प्रोडक्शन का और एक होता है एक्सपेंडिचर का। और प्रोडक्शन के अनुसार 2023-24 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 9.2 था। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर साइड का जो कैलकुलेशन था वो 4.9 था। अब ये जो 2 मेथड्स होते हैं इनके बीच में डिस्क्रिपेंसी अक्सर होती है, लेकिन पिछले सालों में ये डिस्क्रिपेंसी इतनी बढ़ी है कि 2023-24 में 47% डिस्क्रिपेंसी थी। यानी कि जो कैलकुलेशन था एक्सपेंडिचर का वो सिर्फ 4.9 दिखा पाया और बाकी सब वो डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी में डाल दिया। प्रॉब्लम ये है कि अब सारा जो इनके सारे आंकड़े डिस्क्रिपेंसीज पे ही निर्भर हैं। एक और उदाहरण देता हूं आपको। 2025-26 के पहले हाफ में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट 8.4% दिखाई दी इनके आंकड़ों के अनुसार, लेकिन जो कोर इंडस्ट्रीज का आंकड़ा था, कोर ग्रोथ इंडस्ट्रीज जो मतलब रियल डेटा है, उसके मुताबिक 2.9% बढ़ा। तो ये एक और डिस्क्रिपेंसी दिख गई कि एक तरफ आप कह रहे हैं 8.2 और जो दिख रहा है वो है 2.9।
तो ये सच्चाई है, उनके दावे जो भी हों, हकीकत यही है। और इन विसंगतियों के कारण लोगों का भरोसा सरकारी आंकड़ों में टूट रहा है। अब आते हैं रुपये पे। आप सबको मालूम है कि किस तेजी से रुपया गिर रहा है, और एशिया में सबसे खराब करेंसी अब रुपये बन चुका है। और ये डॉलर के बढ़ने के कारण, ये आपको याद है निर्मला सीतारामन जी ने कहा था कि रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। लेकिन अब डॉलर भी गिर रहा है, और इसके बावजूद रुपया गिर रहा है, बाकी सारी करेंसीज बढ़ रही हैं। तो इसका क्या कारण है? एक है कि दो एफडीआई और पोर्टफोलियो फ्लोज दोनों बाहर जा रहे हैं। जो पहले इंडिया आते थे, अब नेट फ्लोज नेगेटिव हो चुके हैं। और इसका कारण क्या है? एक तो लोगों का भरोसा टूट चुका है सरकार के दावों पे। दूसरा है कि जो आपको पता है, एक आंकड़ा निकला है कि हर साल 4 से 5 हज़ार जो करोड़पति हैं, डॉलर मिलियनर्स हैं, वो देश छोड़ के अलग अलग जगह जा रहे हैं। वो जा रहे हैं दुबई, लंदन, सिंगापुर इत्यादि जा रहे हैं। काफ़ी साल से ये हो रहा है। अब उनके साथ उनका पैसा भी निकल चुका है और जाने लग गया है। तो जो आउटवर्ड एफडीआई है वो बहुत बढ़ चुका है। तो एक तरफ लोग कहते हैं कि मेक इन इंडिया हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हो रहा है, लेकिन ये जो हमारे पूंजीपति हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स, वो अपना पैसा बाहर ले रहे हैं। पहले अपने आप को बाहर ले चुके थे और अपने रेजिडेंसी को बाहर ले चुके, अब अपना पैसा बाहर ले रहे हैं। तो अगर हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बेहतरीन है, इतनी अच्छी है, तो ये क्यों हो रहा है? ये सवाल, इसका जवाब है नहीं। और ये काफ़ी मतलब 18.5 बिलियन डॉलर्स पिछले साल बाहर से भारत की इक्विटी मार्केट से निकले हैं, 18.5 बिलियन डॉलर्स, और दिसंबर में ही 4 से ज़्यादा बिलियन डॉलर्स बाहर निकले। अब आते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होती है। कहा जाता है, और कई सालों से कहा गया है, कि क्योंकि हमारे यूथ का पॉपुलेशन और देशों के मुकाबले में ज़्यादा है, तो हमारा ग्रोथ रेट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि यंग लोग होंगे, प्रोडक्टिव होंगे, एजुकेटेड होंगे। लेकिन ये डेमोग्राफिक डिविडेंड अब डेमोग्राफिक नाइटमेयर बनने लग गया है, और ये युवाओं की दुर्दशा इसे दिखाती है। तो जैसे कि प्रोफेसर गावडा ने कहा, मेक इन इंडिया की काफ़ी समय से बात हो रही है। कह रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स इतने बन रहे हैं, हालांकि मोबाइल फ़ोन्स के 80-90 हिस्सा चीन से आता है, यहाँ असेंबल होकर बाहर जाता है। लेकिन कहा जाता है कि मेक इंडिया बहुत सफल है। लेकिन फिर ये बताइए कि मैन्युफैक्चरिंग में जो वर्कर पार्टिसिपेशन है वो घट क्यों रहा है, सर्विसेज में घट क्यों रहा है, और एग्रीकल्चर में बढ़ रहा है? अभी कैसा विकास है कि लोग शहरों से गांव जा रहे हैं, लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की जगह एग्रीकल्चर में जा रहे हैं? ये तो रिवर्स डेवलपमेंट हो गया। और दूसरी बात है कि जब शहरों से गांव जाते हैं, जब मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज से एग्रीकल्चर में जाते हैं, तो जो जॉब्स क्वालिटी है वो और ख़राब हो रही है, वेजेस कम होते हैं। तो ये मजबूरी से हो रहा है, ये कोई अपने आप चुन के ये अच्छी क्वालिटी जॉब छोड़ के पुअर क्वालिटी जॉब नहीं ले रहा है। तो यहाँ एक उदाहरण है गिग वर्क का। गिग वर्क का संकट, आप सोशल मीडिया आप सबने देखा है कि क्या चर्चा हुई है, हाल में चर्चा हुई थी इसके बारे में। और सच्चाई ये है कि गिग इकोनॉमी में चाहे डिलीवरी बॉय हो, चाहे ड्राइवर हो, उनका ना कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ना बीमा है, ना पेंशन है, ना कुछ। तो ये बिल्कुल गुलामी के बराबर बन चुका है। तो जहाँ भी नौकरियाँ बढ़ रही हैं वो लो क्वालिटी नौकरियाँ बढ़ रही हैं, सोशल सिक्योरिटी के बिना बढ़ रही हैं, और लोगों को अपने ही मतलब बेसिकली राम भरोसे छोड़ रही है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बर्बाद हो रहा है। और जहाँ भी सैलरीड वर्कर्स हैं, आंकड़ा दिखाता है कि 40% का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई वो प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं है। और इसका सीधा नतीजा है असमानता। अगला स्लाइड प्लीज। आप सबको पता है, ये कोई छुपी बात नहीं है कि असमानता आसमान छू रही है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट कहती है कि इंडिया सबसे ज़्यादा
असमान देशों में से एक है। अगर आप चाहे आप नेशनल इनकम देखें, राष्ट्रीय आय, चाहे आप वेल्थ देखें, राष्ट्रीय संपत्ति, टॉप 10% के पास 65% वेल्थ है, बॉटम हाफ के पास 6% वेल्थ है लगभग, टॉप 1% के पास है 40% वेल्थ। और ये इसका ये मतलब है कि इंडिया अब साउथ अफ्रीका, ब्राजील, यूएस के असमानता के लेवल पे पहुंच गया। ये देश माने जाते हैं सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी में थी हिस्टोरिकली, और अब इंडिया इनके साथ उसी रैंक में पहुंच गया है। और दूसरी तरफ 5 में से 4 भारतीय नागरिक 200 दिन से कम, 200 रुपए प्रतिदिन से कम गुजारा करते हैं, और एक तिहाई भारतीय नागरिक 100 से कम में गुजारा करते हैं। तो ये ये आंकड़े आपको सीधा दिखाते हैं कि हकीकत क्या है, दावा जो भी हो। और ये जो हमारे नागरिक हैं जो 100 रुपए 200 रुपए में अपना गुजारा निकालते हैं, इनका सबसे बड़ा सहारा था मनरेगा। और आप अगले मनरेगा लेट, ठीक है, तो मनरेगा पे हम आते हैं। लेकिन बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि इनका सबसे बड़ा सहारा मनरेगा था, और मनरेगा पे पूरी तरह सरकार का वार हो रहा है। पूरी तरह मनरेगा को जो जिस तरह बदला गया है, उसका लाभ लोगों को अब नहीं मिलेगा जैसे पहले मिल रहा था। जैसे कि पहली बात है, मनरेगा में अब पहले केंद्र 90% पैसे देता था, अब 60% देगा। और आपको पता है कि जो राज्य सरकारें हैं उनके बजट पे कितना प्रेशर है, तो अब उस पे वो बजट पे और की जो बढ़ोतरी होनी चाहिए वो नहीं होगी। पहले हर ग्रामीण इलाके में उपलब्ध था, अब नहीं होगा। डिमांड पे चल रहा था, अब बजट के हिसाब से चलेगा। पूरे साल चल रहा था, अब 2 महीने नहीं चलेगा। और पहले जहां ग्राम सभा पूरा प्लानिंग करती थी, अब कोई अफसरशाही के हिसाब के आधार पे प्लानिंग होगी, और टॉप डाउन मॉडल अब यहाँ लगा दिया गया है। तो इसका नेट रिजल्ट होगा कि वो दावा करते हैं कि 125 दिन, पहले 100 दिन काम मिलता था, अब कहते हैं 125 दिन करेंगे। लेकिन अगर इतना सारा उन्होंने इस योजना से हटा दिया है, तो अब जो साल में काम करने के दिन मिलेंगे वो तो घटते रहेंगे। अभी वर्तमान में 37 दिन से ज़्यादा काम नहीं मिलता है, और जब ये सारी चीज़ें अब लागू हो चुकी हैं, अब ये आंकड़ा और भी कम होगा। तो एक तरफ असमानता बढ़ रही है, पूंजीपतियों का धन बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ जो 2-4 योजनाएं थी गरीबों को सहारा देने के लिए, उन्हें सुरक्षा देने के लिए, उनको भी खत्म किया जा रहा है। फिर आते हैं, जैसे कि मैंने कहा, रोजगार, यूथ, वेयर आर द जॉब्स। इतने सारे आंकड़े हैं, सब दिखा रहे हैं कि यूथ एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, यूथ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। एक जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, कुल 95 लोगों को नौकरियां मिली, और वो भी इंटर्नशिप की 1 साल की। 55% जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो नौकरी लेने के करने के काबिल हैं। तो यानी कि ट्रेनिंग के बारे में बड़े सवाल उठाए जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे आंकड़े हैं। मैं बस इतना कहूँगा कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है, अगर हमारी ग्रोथ रेट इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई है। मनरेगा का तो हमने कवर कर लिया है। कुपोषण, ये एक और सवाल, ये बहुत सारे आंकड़े हैं न्यूट्रिशन के बारे में, कुपोषण के बारे में, कि स्टंटिंग यानी कि पूरा डेवलपमेंट बच्चों का नहीं हो रहा है क्योंकि उनका पोषण नहीं मिल रहा। 12% हमारी आबादी कुपोषित है। तो ये कैसे अच्छे दिन हैं कि हमारी 12% आबादी भी अभी कुपोषण नहीं मिल रहा है, अनीमिया बढ़ रहा है ऐसे। और इसका ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो ग्रोथ है वो प्रो रिच है, प्रो बिलियनर है, प्रो वेल्थी है, और जो नीचे वाले तबके के लिए कोई की इतनी बुरी हालत इसलिए है क्योंकि सरकार की नीतियां, जो लोग उनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स देते हैं, जो इलेक्टोरल ट्रस्ट देते हैं, उनके लिए सारी की सारी नीतियां डिज़ाइन की गई हैं और इम्प्लीमेंटेशन इसी आधार पे हो रहा है। अब इकोनॉमी की बात तो हो चुकी है,
लेकिन कुछ दिन पहले गीता गोपीनाथ, जो पूर्व IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अभी एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा था और काफ़ी इसकी चर्चा हुई थी कि टैरिफ से बड़ी समस्या पोल्यूशन है। और ये बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप देखें तो जो टैरिफ्स अभी चल रहे हैं 50% डोनाल्ड ट्रंप के, उसका मोटा मोटा इम्पैक्ट 0.5% GDP का होगा और कुछ महीनों में एक समझौता होना चाहिए। प्रदूषण जो है हर साल पिछले 10, 15, 20 सालों से अपनी कीमत चुका रहा है। हर साल ये जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज एक स्टडी है, उसके अनुसार हर साल 20 लाख लोग की मृत्यु होती है प्रदूषण के कारण। 20 लाख, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और एक वर्ल्ड बैंक का कैलकुलेशन, मैं बहुत आंकड़े दे रहा हूँ लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि अगर हमने जो पिछले 15-20 साल से प्रदूषण बढ़ रहा है वो आधे रेट पे बढ़ता, यानी कि सरकार उसके बारे में अगर कुछ करके रेट कम कर देती, तो हमारा GDP 4.5-5% ज़्यादा होता वर्तमान में। तो ये सिर्फ हेल्थ इम्पैक्ट नहीं है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। और टैरिफ्स एक साल का मामला है, प्रदूषण 10, 15, 20 साल से चल रहा है और आने वाले सालों में भी अगर सरकार कुछ करेगी नहीं तो चलता रहेगा और इसकी कीमत चुकानी होगी। फिर आते हैं शिक्षा पे। और शिक्षा में अगर फिर से बहुत सारे आंकड़े हैं यहाँ पे कि फंडिंग गिरी है, इतने सारे सरकारी स्कूलों में 3.5 लाख से ज़्यादा रिक्त पद भरे नहीं गए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी पद भरे गए नहीं है। IIT IIM जो कि हमारे देश की शान है, एक में से 3 पद रिक्त हैं, एम्स में रिक्त हैं। और इसका एक मुख्य कारण है निजीकरण। सरकार का पूरा प्रयास है कि चाहे स्वास्थ्य हो, उस पर आएंगे, शिक्षा हो, इसका निजीकरण हो। और जो हमारे इतने सालों से पिछले आज़ादी के बाद जो संस्थाएं बनाई गई हैं, जो मजबूत संस्थाएं बनाई गई, जो देश की नींव हैं, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाई थी और उनके बाद आने वाले लोगों ने बनाई थी, उनको पूरी तरह बेचा जाए। और ये इसका सीधा नतीजा है और कोई कारण हो नहीं सकता। महिलाओं पे आते हैं। महिलाओं की बेरोजगारी दर और भी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा स्कूल छोड़ने वाली लड़कियां हैं। बहुत सारे, मतलब आंकड़े पे आंकड़ा दिखाता है कि जो हमारे कमज़ोर वर्ग हैं, चाहे युवा हो चाहे महिला हो, फिर अभी बुजुर्ग पे आते हैं, उनकी क्या दुर्दशा है। और बस इंदौर में जो हादसा हुआ ये इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार हमारी शिक्षा का निजीकरण का प्रयास हो रहा है, उसी तरह हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था के निजीकरण का प्रयास हो रहा है। आपको पता है इंश्योरेंस कितना महंगा हो गया है, आपको मुफ्त में इलाज लेना बड़ा मुश्किल हो चुका है। अब अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, आपको पता है कि एम्स छोड़ के कुछ गिने चुने संस्थाओं को छोड़ के क्या स्थिति है। और हर एक को अब निजीकरण के कारण प्राइवेट में जाना पड़ रहा है। और जो यहाँ इंदौर में हुआ वो इसी कारण हुआ, क्योंकि आपने जो पब्लिक हेल्थ है उसको पूरा बैठ गया है, सारा पैसा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जा रहा है। तो फिर नतीजा ये है कि जो ट्रिपल इंजन सरकार है, जो मध्य प्रदेश में, इंदौर कहा जाता था देश का सबसे स्वस्थ और साफ शहर है, उसमें ऐसा एक हादसा कैसे हुआ? क्योंकि सरकार की विफलताओं के कारण में सारे अस्पताल PPP मोड में जा रहे हैं। तो ये पूरा एक स्ट्रैटेजी है अपनी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करने की। और ठीक है, तो मैं बस एंड में कहना चाहता हूँ कि बस पेंशन्स, मैं इतना कहूँगा कि जो बुजुर्ग हैं, पेंशन उनका जो NSAP का पेंशन है 200 रुपये का है। 10 साल पहले 200 रुपये का था, 15 साल पहले 200 रुपये का था। तो जो 2013 में 200 रुपये, अब 100 रुपये तक का परचेसिंग पावर उनमें है, तो आधा हो गया है और इसके बारे में कुछ किया नहीं जा रहा। तो ये सारे मैंने आपके काफ़ी आंकड़े आपके सामने रखे हैं। आप ज़रा रिपोर्ट में अच्छे से विस्तार से सब कुछ हमने डिटेल में रखा है। और बस ये याद कीजिए कि जब
आने वाले दिनों में इकोनॉमिक सर्वे में, बजट में सरकार अपने दावे करेगी तो आपको हकीकत इस रिपोर्ट में ज़रूर मिलेगा और इसे ज़रूर ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद। So the Prime Minister has repeatedly said that India is among the fastest growing economies in the world. It's a bright spot. So by this coming out with this report, are you also questioning that data is being fudged by the government? And what are your expectations from the budget? What corrective measures would you like from the budget this time? See, India's growth rate is the fastest in the world. I will acknowledge that. But as we said right in the beginning, we are questioning the government's numbers and the way it calculates the GDP itself. So, if the calculations are flawed, then those numbers are also flawed and should be corrected downwards. In any case, even if you assume they were true, it is around the range of 6-point-something%. Well, you are aware that our demographic dividend is not going to last forever. If we want to become a middle income economy, if we want to become, in the Prime Minister's concept, Viksit Bharat, etc., we need to grow at 8.5%. Only then can we meet those targets. Otherwise, we have to wait till the end of Kali Yuga for that Viksit Bharat to come. So essentially, you have to focus on the underperformance of this government and its management of the economy. Whatever, you may be doing better than other countries, but we are underperforming as a nation. We are essentially ruining the future of our youth. Yes? Anything on the budget? What are your expectations for the budget and what corrective measures? First, I would like the government to open its eyes to the realities of the economy, to the people who have fallen behind, to the poor, to the women, to the elderly, to farmers, to students, every one of these groups, and don't cut their budgets. Restore scholarships. Focus on fixing the programs that you announce with great fanfare. Look at the CAG report on your skilling program and implement some corrective measures. Because with each year, the cream of our youth are losing their futures. Okay? So stop being self-congratulatory. The problem with this government is that, you remember in, about 10, 11 years ago, we had something called the India Shining moment under Vajpayee, Advani, etc. Everyone was full of self-congratulations. India is shining. And the Congress party asked a simple question, ठीक है, आम आदमी को क्या मिला? Right? And that is the question you need to ask. If you are saying we are moving forward, we are becoming the fastest growing, etc., who has fallen behind? It is the duty of the government to pay attention and to pick them up and to provide that social safety net. Instead, you go out there and slash Manrega. You destroy the carefully constructed social safety nets. Open your eyes, get a heart, finally, and do something for those who are falling behind. Sir, you said that this rupee has become the worst performing currency in Asia, in the whole of the Asia. Where do you find that this government, where do you find that government is going wrong as far as this strengthening of economy is concerned? Feel free anytime. But see, for the rupee to strengthen, there should be more money coming into the country. More investment needs to come in which case there's demand for the rupee, right? But for more investment to come in, people and investors and countries need to have confidence in the management of the economy. So, if they have to believe the truth that those numbers are actually true, etc. Instead, what you're seeing is people are taking money out and they're fleeing India. And that's why
the rupee is also falling continuously. It would be much worse if the RBI had not much more actively, and aggressively intervened to prop up the rupee. So essentially, it's a vote of confidence, a vote of no confidence actually in the government's management of the economy. इंडिया पहले ही मुश्किल का सामना कर रहा है आर्थिक स्थिति में जो अमेरिका के टैरिफ की वजह से। आज भारत और ईयू के बीच जो है ट्रेड डील FTA हुआ है, तो उसको आप कैसे देखते हैं, खासकर अमेरिकन टैरिफ के नज़रिए से? देखिए, भारत और अन्य देशों के बीच में ट्रेड तो होना चाहिए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट फ्लोज होने चाहिए। अभी इनके डिटेल्स देखने होंगे कि एग्रीमेंट में क्या है, उसका कुछ समय लगेगा, लेकिन इन प्रिंसिपल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक अच्छी चीज़ है। बस हमें ये देखना है कि जो हमारे जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, जैसे एग्रीकल्चर हो, जैसे गरीब जो वर्कर्स हों, कुछ डेयरी हो, कुछ क्रिटिकल सेक्टर्स हैं जिनको थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, उनको खुलेआम कंपटीशन अगर करना है तो उसके बारे में थोड़ा सोच के करना है। और हमने देखा है कि कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंपोर्ट के बारे में कुछ है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। लेकिन मेन इशू है कि सरकार भारत के इंटरेस्ट को डिफेंड करे और उसी के साथ साथ ट्रेड को बढ़ावा दे, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे। तो ये बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए। तो ये ना हो कि जो भी दबाव ट्रंप से आए या कहीं और से आए उसके सामने घुटने टेक ले। तो ये हम देखना चाहेंगे कि अग्रीमेंट में क्या है, डिटेल्स क्या हैं, लेकिन इन प्रिंसिपल ऐसे अग्रीमेंट तो होने चाहिए। बताइए। Is basically a reply on the part of government to the way in which there was continuous pressure on the side of the United States through tariffs or the way it has impacted on our exports. This trade deal which is being signed by India and EU, that is being a messaging which India has done to the United States. Do you believe so? Well, you've been following this trade deal. The India-EU trade deal has been in the works for many, many years, ahead of, much before President Trump announced a variety of tariffs on the country. So in some sense, this is a culmination of a much longer process. However, the timing as of now and possibly the speeding of the process is a way of countering the US tariffs, saying that we do have alternatives. Let us look and see whether in this, by picking up the pace, have they compromised India's interests. We need to look at those details. सरकार कहती है कि सर युवा आत्मनिर्भर बन चुका है और जो है कोई भी युवा जो है बेरोजगार नहीं है, सभी के पास नौकरी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो सरकारी सेक्टर में हो। तो इस पर आपका क्या कहना? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि बजट आने वाला है तो कांग्रेस की क्या आशाएं हैं उससे? देखिए, पहली बात है कि जो युवा की जो दुर्दशा है वो हमारे रिपोर्ट में सारे आंकड़े हैं, आप देख सकते हैं कि जो ये समोसे तलना या जो भी अजीब सी बातें मोदी जी या भाजपा के चाहे प्रवक्ता हों या मंत्री हों कहते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। युवा जानता है कि सच्चाई क्या है, हकीकत है क्या है, तभी आधा युवा देश छोड़ने का प्रयास कर रहा है। आत्महत्या हो रही है। पेपर लीक्स के बारे में तो आपको पता ही है, हर साल कहीं ना कहीं पेपर लीक होता है, लोगों की जो आशाएं हैं वो ख़त्म हो रही हैं। तो इससे मैं जुड़ा आपका जो दूसरा सवाल था बजट का, बजट होता क्या है कि बजट में जो छोटी सी अहम बात हो सकती है लेकिन उसका उतना महत्व नहीं है, लेकिन उसको घुमा फिरा के बताया जाता है कि ये पूरा देश का परिवर्तन होने वाला है। एक छोटी बात को बहुत बड़ा दिखाते हैं, लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं जो सरकार का दायित्व है, नौकरी दिलाना, स्वास्थ्य दिलाना, शिक्षा दिलाना, इसमें पूरी तरह विफल हैं। एक तरफ निजीकरण हो रहा है, दूसरी तरफ जो निवेश होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आपको प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बैठे हुए हैं, ठीक से काम नहीं कर रहे। आपको डॉक्टर के इलाज चाहिए तो बहुत सारा पैसा देना पड़ता है।
आपको शिक्षा लेनी पड़ती है, आपको डॉक्टर बनना है तो किसी प्राइवेट कॉलेज में जाके बहुत सारा लाखों रुपए देकर आपको डिग्री मिलती है। तो जो बेसिक मामला है वो गड़बड़ है। तो आप ऊपर बहुत सारे दावे कर सकते हैं, आप बहुत चमकती हुई चीज़ें दिखा सकते हैं, आपको योजना की घोषणा कर सकते हैं, आप AI और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं ना कहीं शायद कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक मामला है स्वास्थ्य, शिक्षा और नौकरी, इसमें पूरी तरह सरकार फेल है। तो हमारी आशा है और अपेक्षा है कि सरकार इस बजट में इसके बारे में कुछ करे। Thank you very much. धन्यवाद.